ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां तृतीये प्रातिपदिक खंडे अथ द्वादशोऽध्यायः अध्याये। ब्रह्मवाच अथ शैलपतिर्हृष्ट सत्पुष्पफलसञ्चयं समादाय तन्या सहितो अग्वाद्वरान्तिकम् स गत्वा त्रिजगन्नाथं प्रणम्य ध्यानतत्परम् अपर्यामास तनयां कालीं तस्मै हृद्वादुताम् फलपुष्पादिकं सर्वं तद्ग्रे निध्याय स अग्रे कृत्वा सुतां शम्भु अमिदमाह च शैलराट् हिमगिरिरुवाच भगवंस्तनया मे त्वां सेवितुं चन्द्रशेखरं समुत्सुका समानीता त्वदाराधनकाङ्क्षया सखीभ्यां सह नित्यं त्वां सेवतामेव शङ्करम् अनुजानीहि तानाथं मयि ते यद्यनुग्रह ब्रह्मवाच अथ त्वां शङ्करो पश्यत् प्रथमारूढ यौवनां फुलेन्दीद्वारपत्राभां पूर्णचन्द्र निभाननां समस्तलीला संस्थान शुभवेश विजृम्भितां कम्बुग्रीवां विशालाक्षीं चारुकर्णयुगोज्ज्वलां मृणालाय तत्पर्यन्त बाहुयुगं मनोहरां राजीवकुण्डमलप्रख्यो घनपिनो दृढसस्तनो बिभ्रन्ति क्षीणमध्यां च त्रिवलीमध्यराजिताम् स्थलपद्मप्रतीकाक्षपादयुगं विराजितां ध्यानपञ्जरनिर्बुद्ध मुनिमानसमप्यलं दर्शनादभ्रंशने सक्तां शिरोमणिं दृष्ट्वा त्वां तादृशीं ताध्यानिनां च मनोहरां विग्रहे तन्त्रमन्त्राणावर्धिनी कामरूपिणीं न्यमील्यदृशो शीघ्रं दध्यस्वं रूपमुत्तमं परतत्त्वं महायोगी त्रिगुणात् परं वयं दृष्ट्वा तदानीं सकलेश्वरं विभुं तपोजुषान् मिलितेक्षणं कर्पदिनचन्द्रकलाविभूषणं वेद्यं परमासने स्थितं ववन्दशीर्षणा च पुनर्हिमाचलसंशय प्रापद्दीनसत्त्व उवाच वाक्यं जगदेकबन्धुगिरीश्वरो वाक्यविदां वरिष्ठ हिमाचलवाच देवदेव महादेव करुणाकर शङ्कर पश्य मा शरणं प्राप्तं मुन्मील्य नयने विभो शिव सर्वमहेशान जगदानन्द कृत्प्रभो त्वां नतोऽहं महादेव सर्वापदिनिवर्तकं न त्वां जना जानन्ति देवेष्वेदाशास्त्राणि कृत्स्नश अतीतो महिमाध्वानं त्वां न सोऽस्तदा अत्वावृत्ति तत्सत्त्वां वे चकितं सदा अभिधते श्रुति सर्वा परेषां का कथा मता जानन्ति बहवो भक्ता सत्त्ववत्कृपां प्राप्य भक्तितः शरणागत भक्तानां न कुत्रापि भ्रमादिकम् विज्ञप्तिं शृणु मत्प्रीत्या स्वदासस्य ममाधुना त्वदेवा ज्ञातात दीननत्वा द्वर्ण्यामि हि सभाग्योऽहं महादेव प्रसादात् तत्त्वशङ्करा मत्वा स्वदासमानात् कृपां कुरु नमोऽस्तु ते प्रत्यं चागमिष्यामि दर्शनार्थं तव प्रभो अन्यासुत्या स्वमामि निदेश दातुमर्हसि ब्रह्मवाच इत्याकर्णवचस्तस्य ओ वचस्तस्योन्मील्य नेत्रे महेश्वरा त्यक्तध्यान परामृश्य देवदेवो ब्रवीदवच्च
महेश्वरवाच आगन्तव्यं तव्या नित्यं दर्शनाथ ममाचला कुमारी सदने स्थाप्य नान्यथा मम दर्शनं ब्रह्मवाच महेशवचनं श्रुत्वा शिवा तातस्तथाविधम् अचला प्रत्युवाचेदं गिरीशं नतकन्धरा हिमाचलवाच कस्मान्मयानया सार्धं नागतव्यं तदुच्यतां सेवने किं योगेयं नाहं वेदं यत्र कारणं ब्रह्मवाच ततो ब्रवीरद्विरिं शम्भु बृहस्सन्वृष्य त्वचा लोकाचारं विशेषेण दर्शयन्निकुयोगिनां शम्भुरुवाच इयं कुमारी सुक्षेणी तन्वीचन्द्रा ननाशुभा नानेतव्या मत्समीपे वारयामि पुनः पुनः मायारूपा स्मृता नारी विद्वेद दिवेर्द पारगे युवती तु विशेषेण विघ्नकर्त्री तपस्विनाम् अहं तपस्वी योगी च निर्लिप्तो मायया सदा प्रयोजनं युक्तया वै स्त्रिया किं मे सती बुधर इवं पूर्णं वक्त्यं तपस्वी वर संक्षिता वेद धर्म प्रवीण सत्वं यतो ज्ञाति वरो बुधा भवत्यचल ततः संगाद्वेष योतपतिराशु वै विन्यस्ति च वैराग्यं ततो भविष्यति सत्तपा अतस्तपस्विना शैल न कार्या स्त्रीषु संगति महाविश्वमूलं सा ज्ञान वैराग्या नाशिनी ब्रह्मवाच इत्यादुक्त्वा बहुतरं महायोगी महेश्वरा विराम गिरिशं तं महायोगी वरा प्रभु एतच्छ्रुत्वा वचनं तस्य शम्भुर्निरामयं सप्रेहं निष्ठुरं च कालितात क्षितिको भूतसुरेर्षे त्वद्दकिच्चिन्द्वचाकुल्याक्षस्तूषणीं तपस्विनोक्तं वचनं निश्मय तथा गिरीशं चकितं विचारये प्रणम्येव शिवं भवानी जगादवाक्यं विशदं तदानीम् इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे शिवहिमाचल संवादवर्णन नामो द्वादशोऽध्यायः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। भवानी उवाच किमुक्तं गिरिराजाय त्वया तपस्विना तदुत्तरं शृणु विभो मतो ज्ञानविशारदा तपाशक्तिया अन्विता शम्भो करोषि विपुलं तपा तव बुद्धिरियं जाता तपस्तप्तुं महात्मना सा शक्ति प्रकृति ज्ञेया सर्वेषामपि कर्मणां तया विरच्यते सर्वं पाल्यते च विनाश्यते कस्त्वं का प्रकृति सूक्ष्मा भगवस्तं दृश्यतां विना प्रकृत्या च कथं लिङ्गरूपी महेश्वर अर्चनीयोऽसि वन्द्योऽसि ध्येयोऽसि प्राणिनां सदा प्रकृत्या च विचार्येति हृदा सर्वं तदुच्यतां ब्रह्मवाच पार्वत्यास्तद्वचा श्रुत्वा महोत्कर्णे रता सुविहस्य प्रसन्नात्मा महेशो वाक्यं ब्रवीत् महेश्वरूपाच तपसा परमेनैव प्रकृतं नाशयाम्यहं प्रकृतारहितशम्भुरं तिष्ठामि तत्त्वता तस्माच्च प्रकृते सर्दिन कार्यसङ्ग्रहकचित् स्थातव्यं निर्विकारेक्ष लोकाचार विवर्जिते ब्रह्मवाच इत्युक्ता शम्भुना तात लौकिकव्यवहारता सुविहस्य हृदकाली जगाद मधुरं वचा काल्युवाच यदुक्तं भवता योगिन् वचनं शङ्कर प्रभो सा च किं प्रकृतिर्न स्यादतीतस्तां
भवान् कथम् एतदिच्चार्य वक्तव्यं तत्त्वतो हि यथातथं प्रकृता सर्वमेतच्च पद्मस्ति निरन्तरं तस्मात् त्वया न वक्तव्यं न कार्यं किञ्चिदेव हि वचनं रचनं सर्वं प्राकृतं विधिचेतसा यच्छृणोषि यद् शनासि यत् पश्यसि करोषि यत् तत्स्वरं प्रकृते कार्यं मिथ्यावादो निरर्थक प्रकृते परं श्रेत्वं कृर्मथं तप्यसे तपा त्वया शम्बोधुनास्मिन् अग्निग्रोभिंवति प्रभो प्रकृत्या गिलितोऽसि त्वं न जानासि निजं हर निजं जानासि चेदीश किमर्थं तप्यते तपा वाग्वादेन च किं कार्यं मम योगी सत्वया सह प्रत्यक्षे हानुमानस्य न प्रमाणं विदुर्बुधा इन्द्रियाणां गोचरत्वं यावद्वति देहिनां तत्सर्वं विमन्तव्यं प्राकृतं ज्ञानी निर्भिर्ध्या किं बहुक्तेन योगीश शृणु मद्वचनं परं सा चाहं पुरुषोऽसि त्वं सत्यं सत्यं न संशय मदनुग्रहात् तत्सत्त्वं हि सगुणरूपवानमत् मा विना त्वं निरोहिसि न किञ्चित् कर्तुमर्हसि पराधीन सदा त्वं हि नानाकर्मकरो वशी निर्विकारी कथं त्वं हि नालिप्तक्षमया कथं प्रकृते परमोऽसि त्वं यदि सत्वं वचस्तव तर्हि त्वया न भेतव्यम् समीपे मम शङ्कर ब्रह्मवाच इत्याकर्ण्यवचस्तस्या साङ्ख्यशास्त्रोदितं शिवं वेदान्तमस्तस्सन् संस्तो हि वाक्यमुचे शिवां प्रति श्रीशिव उवाच इत्येवं त्वं यदि ब्रूषे गिरिचे साङ्ख्यधारिणि प्रत्यं कुरु मे सेवाम् मनीषविद्यां सुभाषिणी यद्यं ब्रह्म निर्लिप्तो मायया परमेश्वर वेदान्तवेद्यो मायेशस्त्वं करिष्यसि किं तदा ब्रह्मवाच इत्येवमुक्त्वा गिरिजां वाक्यमुचे गिरिं प्रभु भक्तानुरञ्जनकरो भक्तनुग्रहकारका शिववाच अत्रैव सोऽहं तपसा परेण गिरे त्वप्रस्त्वरेतिर्मये चरामि भूमौ परमार्थ भावस्वरूपं मानन्दमयं सुलोचयन् तपस्तप्तु मनुज्ञा मे दातव्या पर्वताधिपा अनुज्ञा विना कञ्चित्तपा कर्तुं न शक्यते ब्रह्मवाच एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य देवदेवस्य शूलिना प्रणम्य हिं वाञ्छम्भूमिदं वचनं ब्रवीत् हिमवानुवाच त्वदयं हि जगत्सर्वं सदेवासुरमानुषं किमप्यं महादेव तुच्छो भूत्वा वदामि ते ब्रह्मवाच एवमुक्तो हिमवता शङ्करो लोकशङ्करा विहस्य गिरिराजं तं प्राह याहीति सादरं शङ्करेणाभयनुगृह्णात् स्वगृहं हिं वान्ययो सार्धं गिरिजया वैस प्रत्यहं दर्शने स्थिता पित्रा विनापि सा काली सखीभ्यां स नित्यश जगाम शङ्कराभ्यासं सेवाय भक्ति तत्परा निशिषेधनात्ता कोऽपि गणो नन्दीक्ष राधिका महेश शासनातात तच्छासनकरशुचि शाखं वेदान्तमत्य शिव्यो शिवदा सदा संवाद सुकृच्योक्तो भिन्नयो सुविचारता गिरिराजस्य वचनात्नयां तस्य शङ्करापाक्षरे समीपे जघ्रागौरवादपि गोपरा
उवाचेदं वचा काली सखीभ्यां स गोपति नित्यं मा सेवतां यातु निर्भीताहात्र तिष्ठतु एवमुक्त्वा तुं तां देवी सेवाय जगरे हरा निर्विकारो महयोगी नानालीलाकरा प्रभु इदमेव महधैर्य धीरानासुत्पवस्विनां विघ्नवन्त्यपि सम्प्राप्य यदीर्घ नैर्न विहन्यते तथा स्वपुरमायातो गिरिराटपरिचारके उमोदातीव मनसि सप्रिये स मुनीश्वरा रक्ष ध्यान योगेन परमात्मानमादरात् निर्विघ्नेन स्वमनसा त्वासि चिन्तयितुं स्थिता काली सखीभ्यां सहिता प्रत्यहं चन्द्रशेखरं सेवमाना महादेवं गमनागमने स्थिता प्रक्षालय चरणो शम्भो पपोतश्चरणोदकं वही शोचेन वस्त्रेण चक्रे तद्रात्र मार्जनं षोडशेनोपचारेण सम्पूज्य विधिवद्वरं पुनः पुनः सुप्रणमय ययो नित्यं पितुर्गृहम् एवं सेवमान्यां शङ्करं ध्यानतत्परं यतीयाय महान् काल शिवाय मुनिसतम् कदाचित् सहिता काली सखीभ्यां शङ्कराक्षमे वितेने सुन्दरं गान सुतालं स्मरवर्धनं कदाचित् कुशपुष्पाणि समिदं न्यति स्वयं सखीभ्यां स्थानसंस्कारं कुर्वती न्यवस्तदा कदाचिन्त्य चियता गेहे स्थिता चन्द्रभृतो भृशं वीक्षन्ती विस्मयामास सकामा चन्द्रशेखरं तत्सत्तेन भूतेशंस्था निस्सङ्गा परिस्थितां सोचिन्तयतता वीक्ष्य भूतदेहे स्थितेति च नागृहीदिरिशकालिं भार्यार्थे निकटे स्थितां महालावण्यनिश्चयां मुनीनामपि मोहिनीं महादेव पुनर्दृष्ट्वा तथां तासंयतेन्द्रियां स्वस्वेन सेवने रतां नित्यं सद्य चिन्तयत् यदेवैषा तपक्षार्या व्रतं काली करिष्यति तदा च तां गृहीष्यामि गर्वबीजविवर्जितां ब्रह्मवाच इति सञ्चिन्त्य भूतेषु द्रुतं ध्यानसमाक्षिता महायोगीश्वरो भूत्रे महालीलाकरा प्रभु ध्यानसक्तस्य तस्याथ शिवस्य परमात्मना हृदि नासीनमुने काचिन्दन्यचिन्ता व्यवस्थिता काली त्वनुदिनं शम्भु सदक्त्वा स्म सेवता विचिन्तयन्ती स्ततं तस्य रूपं महात्मना हरो ध्यानपराकालीं नित्यं प्रक्षेत सुस्थितां विस्मृत्य पूर्वचिन्तातां पश्यन्नपि न पश्यति एतस्मिन्नन्तरे देवा शक्राद्यामुनक्षते ब्रह्माज्ञा स्मरं तत्र प्रेषयामासुरादरात् तेन कारयितुं योगं काल्या रुद्रेण कामता महावीर्येणासुरेण तारकेण प्रपीडिता गत्वा तत्र उपाय करो निजं चक्षुभेन हरा किञ्चित् तं च भस्मीचकारः पार्वत्यपि विगर्वा मुने तस्य निदेशता तत्सत्पो महत्कृत्वा शिवं प्राप पतिं सती बभूव तुस्तो सुप्रीतो पार्वती परमेश्वरो चक्रतुर्देवकार्यं हि परोपकरणे रतो इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे पार्वतीपरमेश्वर संवादवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः।